All right, so I am live, I think. Okay, so hello everyone. Let's start today's session. Today is Electrostatics Lecture 3. Okay. So let's start Electrostatics Lecture 3. Okay. So Lecture 1 और Lecture 2 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो अगर तुमने नहीं देखे हैं तो तुम लोग I think it's all right. Okay. So this is Electrostats Lecture 3. So let's start with today's lecture. This is something about me. Okay, so my name is Utkarsh and I am second year undergraduate in Department of Electrical Engineering at IIT Kanpur. These are some of my achievements which I have made in the past few years. I was All India rank 1, 2, 3, 4 in JEE Advanced 2024, All India rank 1989 in JEE Main 2024, National Top 1% in National Standard Examination in Physics, and I am INCHO qualified. Okay, on top of it, I am a physics enthusiast. Okay, and this is a meme. I always say that physics has four parts, three of which are maths, and one of which is some cool theory which you don't understand. So I will help you out to understand this cool theory. Okay, and maths we will learn by solving various problems. All right. So this is something about me, and I hope that you have followed the lecture one and lecture two, because without that it will be difficult for you to understand this lecture. Okay, so let's continue. All right. So in the past few lectures, in the past two lectures, I have covered forces, as in Coulomb's law, and I have covered electric field for point charge. Okay. We also discussed some interesting question on SHM of charges. Okay. We also discussed this part. Okay. So we also discussed SHM of charges, right? And we will practice quite a few more questions on this part. All right. So what will I cover today? I will cover electric field for different type of charge distributions. We will cover line charge, arc, sphere. We will also see sphere. All right. So these are the things which I will cover today. Okay. So I think we should start. All right. So before starting with anything else, I think we should practice a few questions based on what I have taught yesterday. All right. So this is a question. What the question says is, what will be the magnitude of electric field at point O shown in figure? Each side of figure is perpendicular to each other. Okay. So in this question, basically what we have to do is we have point charges. All right. So we have point charges situated here, 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. Okay. So we have how many point charges we have? Two, two, four, 8 point charges. We have 8 point charges. Okay. All right. So we have 8 point charges and we have to find the magnitude of electric field at point O. So to do this question, we should write the individual electric field due to all the point charges. Okay. So let's write. So we will have electric field due to B.
because it is a positive charge. We will have electric field due to G like this. All right. After that, we will have what we will have. We will have electric field due to C in this direction, and we will have electric field due to F in this direction. All right. So we should first of all write all these. So what will be the electric field? Let's write one by one. Electric field due to B will be K Q, charges plus Q. So KQ by R square. We will write electric field by G, let's say. So what will be the electric field by G? K into 2Q upon में L square. All right. We will write electric field by C. So electric field by C is also same K into 2Q by L square. Okay. And then we will write electric field by uh, we have written it by C. We should write it by F. Okay. So electric field by F would be K. I am writing only the magnitude as direction I have already mentioned in the above figure. Okay. So electric field due to F would be K into Q by L square. All right. So adding up all these, so what we will get is electric field of we will get a net electric field in y direction as this. This is E net. Was what is its value? Its value would be K into Q by L square since we have to subtract the above two. All right. So this is E net, and we will also get a E net in this direction, that is in X direction. This E net will also be same. Okay. So we will have a net electric field at 45 degree like this, which will be root 2 K Q by L square, something like this. Okay. So now we have to write by these all the charges which are situated at a distance of at a nearest distance of root 2L. Okay. So we should now in order to write these things. Okay. So I think I should clear it a bit in order to get it better. Okay. Wait a minute. All right. Right. So I have cleared it a bit. So in order to avoid any misconfusion. Okay. All right. What is wrong? Okay. So we have we have a net charge in this direction. All right. So we have a net electric field in this direction. Now we have to write of the other four charges which are left. Okay. So from D, we will also have an electric field in this direction. Okay. From A, we will have an electric field in this direction. Okay. And these two will be equal. So the net resultant of these two will be in this direction. Okay. This is E net due to which two? A and D. All right. E net due to A and D. Looking forward, H and E. So E will have something like this. All right. And H will have something like this. So it will have two components. Let's see and let's calculate these two. So first of all, what I will do is, okay. So first of all, what I will do is I will find EAD. I will find EAD. All right. So in order to find EAD, I have to first of all find electric field due to A. So electric field due to A will be what? K Q by R square. What is the value of R? R value of R is root 2L, so it will be 2L square. And in order to get the resultant, we will get 2E cos theta. So the resultant of the above two will be KQ by 2L square cos 45. Cos 45 की value 1 by root 2 होती है. So we will get KQ by root 2 L square. All right, because this two and this two will cancel each other. All right. So अब इसके आगे देखोगे तो यार अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
मैंने सबको कंसिडर कर लिया, सिर्फ मेरा ई और मेरा और मेरा एच वाला बच गया है, ठीक है, रेस्ट ऑल आई हैव already used. Okay, so now what I will do, I will write these two. Okay, so we will have k 2q by 2l square. Okay, so we will have kq by l square. अब ये के क्यू बाय एल स्क्वायर हो जाएगा, और के क्यू बाय एल स्क्वायर जो है ये इसके पैरेलल में आ गया है, ठीक है, ये और ये पैरेलल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इज लाइक दिस, एंड व्हेन वी विल राइट व्हाट वी विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एच. Okay, and these two will be sorry anti-parallel because electric field due to E would be something in this direction. Okay, so because since E is positive, okay, we will write electric field due to H. All right, we will write electric field due to H. What will be the electric field due to H? Electric field will be due to H will be KQ by 2L square, something in this direction. Okay, so what I will do, the easiest way to solve is take components in all direction. So it will be 1 by root 2 I cap minus 1 by root 2 J cap. All right, this is electric field. This is electric field vector due to H, this and this. All right. And what I will do, I will also take the component for electric field due to E. Electric field due to E, it is easy to take the component KQ by L square 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 J cap. All right. So 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 J cap. And for this E net, I will also take the component. So for the E net, I will take the component as KQ by L square into में it is in this direction, so we will have two component, one in this direction and one in this direction, so minus I cap minus J cap. Okay, and we also have electric field net due to AD, that is uh, minus KQ by 2L square I cap. All right. So now the only thing which I have to do is I have to add all the above figures. Okay. So upon adding all the things in I cap, I can see that this part and this part will cancel each other. Okay. So it is very simple. I am simply cancelling those. Okay. And what I will be left with in I cap would be KQ by L square. We will KQ by L square. Let's take outside. And seeing the option, it is basically KQ by 2L square outside. So let's take KQ by L square outside. All right. What we will get is 1 by 2 root 2 minus 1. This is the figure in I cap. And we have to take something in J cap as well. J cap, if seeing carefully, in J cap, what we will get is minus 1, and 1 by root 2 minus 1 by root 2 would be 1 by 2 root 2 would be plus 1 by 2 root 2. All right, J cap. So now what we will do is we will whole square these two, as since we have to find the magnitude. So जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा के क्यू बाय एल स्क्वायर इंटू रूट टू, या फिर हाँ रूट टू ले सकते हो, रूट टू ले लो, टाइम्स दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज 1 बाय 2 रूट टू minus 1 by root 2 plus 1. Okay, so this is the thing, and see what we can do is we will multiply this whole, so we will get kq by 2l square. All right, kq by 2l square into 2 root 2 minus 1. All right, so B Bombay, this is my final answer. Okay. So this is how you can tackle this problem. Okay. All right. So this is a bit messy since we have many point charges. So we have to write each one electric field due to each in vector form. Okay. To solve this problem. So it is a bit messy. And if you mess up in, and if you do some calculation wrong,
अगर कैलकुलेशन में तुमने कहीं पे भी गलती कर दी तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू सॉल्व सच प्रॉब्लम इन जेई मेन, सिंस टाइम भी बहुत कम होता है जेई मेन में. यू हैव टू सॉल्व 25 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स. सो मैस अप नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा कामली करना है और एक बार में सही आंसर लाने की कोशिश करनी है, जैसे कि मैंने किया यहाँ पे. ठीक है, तो ये चीज हो गई. उसके बाद लेट मी सी इफ आई हैव सम मोर क्वेश्चन. Okay, so let's try solving this. A positive charge particle of 100 milligram is thrown in opposite direction to a. So it is a first of all positive charge particle. Okay, uniform electric field of strength 1 into 10 raised to the power 5 Newton Coulomb inverse. If charge of this particle is 40 microcoulomb and initial velocity is 200 meter per second, how much distance it will travel before coming to rest momentarily? Okay, so what we are doing is this is more of a NLM. This is a mixed question, and this is a very nice question. This has involved NLM, kinematics, okay, and electrostatics. सो ऐसे सवाल तुम्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे जेई मेंस के अंदर. मैंने पहले भी कुछ सवाल डिस्कस किए थे कल, और आज भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ. काइनेमेटिक्स में स्पेशली एक्सेलरेशन, मोशन, इन सब के काफी सवाल तुम्हें देखने को मिल जाते हैं. ओके, सो चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज लेटर से क्यू है, मास एम है. ठीक है, इसको हमने फेंका है v वेलोसिटी से. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगी क्यू ई, है ना. दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स. सो जो इसका रिटार्डेशन आ जाएगा, रिटार्डेशन की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई बाय एम with a minus sign. Okay, so now what we have to do, we have to find the distance it travel before coming to rest momentarily. So what will happen कि धीरे धीरे करके जो रिटार्डेशन है वो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, और किसी एक पॉइंट पे जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये बैक मोशन फिर से चालू कर देगा, यानी वेलोसिटी पीछे की तरफ डेवलप होना चालू हो जाएगी ड्यू टू द रिटार्डेशन. सो आई विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ओके, सो या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s. सो द फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज u स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन इज -2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है क्यू ई बाय एम इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी एम यू स्क्वायर बाय 2 QE. ठीक है, नाउ आई विल सिंपली पुट द वैल्यू इन SI यूनिट्स. 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम है तो मतलब 100 इंटू 10⁻⁻6 इन किलोग्राम्स. ओके, द इनिशियल वेलोसिटी इज like 200 meter per second. 4 into 10⁻⁴ would be the value of u square upon 2 into what is the charge? Charge is 40 into 10 raised to the power -6. ठीक है, and what is the value of electric field? Electric field is 1 into 10⁵. ठीक है, so ये और ये कट जाएगा. ठीक है, it will cancel out. ऊपर जो पार्ट बचा है उसको देखोगे तो 100 into 10⁻⁴ into 10 raised to the power -6 will cancel out. So you have 4/8, which is nothing but 1/2, which is nothing but 0.5 meter. Okay, so 0.5 meter will be the right answer. Option D, Delhi is correct. All right. So this is also a nice problem. Okay. 2 point charges A and B, or let's move to the next question. Okay. So 2 point charges A and B of magnitude this and this respectively are placed at a distance d apart. Electric field in the middle point O between the charges is this. The distance d between the point charge A and B. So this is a very simple question. Okay. Very simple one. So we have a charge Q and a charge minus Q separated by, let's say, a distance d. So in the center part of point O, मान लेते हैं कि Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी वो E रही होगी, और जो माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसकी भी डायरेक्शन सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड उसका भी E ही रहेगा. सो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो है 2E इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁴. राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 3.2. जो मॉड ऑफ E की वैल्यू है वो 3.2 इंटू 10⁴ है. 3.2 को अगर k की वैल्यू पुट कर दूं 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? q की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻6, और
Upon में what we have is upon में we have r square. All right. So upon में we will have d square d by 2 का होल स्क्वायर which is d square by 4. All right. क्योंकि ये वाली जो दूरी है वो d by 2 है. ठीक है. तो काफी सिंपल क्वेश्चन है. अब इससे तुम आराम से d निकाल सकते हो. ओके. कैसे निकालेंगे? तो we can do it very easily. 9 into 32, and we will see that this become 10 raised to the power 3. So this and this will cancel out. So 9 into 32 by 32 is your value of d square. So from here you can see very easily that d की value 3 आ रही है, 3 meter. So it is the right option. So option B Bombay is again right. So let's move forward. देखता हूँ अगर और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं लेकर के आ पाया हूँ आज. Two identical charge having mass this are placed separation of L such that they stay in limited equilibrium. Okay, this is also a question which is very basic. All right, this is also quite a basic question, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग. ठीक है. Okay, so let's start. Two identical charged particles, each having mass 10 gram and charge 2 into 10 raised to the power minus 7 coulomb, are placed on horizontal table with separation of L between them such that they stay in limited equilibrium. If the coefficient of friction between each particle is 0.25, find the value of L. G की वैल्यू दे रखी है. ठीक है. So this is question related to something about friction also. ठीक है. तो ऐसे सवाल भी बन जाते हैं काफी बारी. ठीक है. तो what will happen in this question is that the force due to electrostatic interaction will be equal to the force due to friction. All right. So force due to electrostatic interaction will be K, the value of Q, and the distance between them, L between them, such that they. So we have to find the value of L only. L is square. Okay, and the value of friction. So let me tell you something about friction. Okay. सो अभी के लिए बस इतना समझो कि फ्रिक्शन अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. आई थिंक कि पढ़ा होगा लोगों ने 11th में. ठीक है. सो फ्रिक्शन अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. और फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अगर है तो म्यू स्टैटिक एम जी, दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज इट इज म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल, एंड इन दिस केस नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी. ऑल राइट. This case normal equal to mg. Okay, so kq by l square equal to mu s mg. So l की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ के क्यू बाय mu s mg. So finding this we will get 9 into 10 raised to the power 9. q की वैल्यू है 2 into 10 की पावर माइनस 7. ठीक है. अपॉन में म्यू एस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस? म्यू एस की वैल्यू है 0.25. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? मास की वैल्यू कितनी आ रही है? मास की वैल्यू आ रही है 10 ग्राम. सो दैट विल बी 10 रेज टू द पावर माइनस 2 किलोग्राम. ऑल राइट. म्यू एस एम एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी गिवन? जी की वैल्यू 10 दे रखी है. ओके. सो नाउ इफ यू विल सी, now if you will see, we can take this and write 10 raised to the power minus 2 here. All right. So what we will get is 10 raised to the power 10 raised to the power minus 2, 10 raised to the power minus 2, and a 3. All right. So this is the answer. Okay. So we will get 18 into 10 square into 10 cube by 25. All right. So we can cut 10 square as 4 and we can take the under root basically. So what we will get is we will get 9 का 3 बाहर आ जाएगा. ठीक है. और 4 का 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट ऑफ, और 10 क्यूब से मैं 1000 के 10 को बाहर निकाल करके अंदर अंडर रूट ऑफ 20 कर दूंगा. ओके.
So it will be nothing but 3 to 6, 60. All right. Uh, is it right? Yeah, I think so. 60 under root 20. Okay. So this will be the answer. If you calculate it, you will match with one of the given options, and this is how you solve it. Okay. So this is again one of very easy questions. Okay. So let's move forward. Okay. Uh, all right. So now okay. So now let's start. Let's discuss the homework problem which I have given in the last lecture. All right. So the homework problem which I gave to you was electric field due to a finite line charge. So I had asked you to find out the electric field due to a finite line charge. Okay. So to find it, what we will do is, let us suppose that this distance is d, and this is some finitely uniformly charged with charge density, charge per unit length lambda. And suppose this angle is theta 1 and this angle is theta 2. Okay. So in such case, the electric field at this point, and if this distance is d, which I have already written, so the electric field at this will have two component. All right, one is E parallel and one is E perpendicular. Okay, so the value of E perpendicular which you will get. So how to get it? We will first go on a distance x, take a unit element dx, write electric field due to this, that is dE. Then, since electric field is a vector, so we cannot directly integrate d. We will first take its two component, d cos theta and d sin theta. Okay, then we will first of all integrate E perpendicular in a differently, separately, and E parallel separately. So the value of E perpendicular which you will get upon integration is k lambda by r or d sin theta 1 plus sin theta 2. Okay, and the value of E parallel would be k lambda by d cos theta 1 minus cos theta 2. All right. So this is the answer that we get. Okay. So you can cross verify it using integration. एंड एक चीज याद रखना यार कि जितने भी कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम होते हैं उनमें भी ऑलवेज सॉल्व बाय टेकिंग एलिमेंट्री चार्ज एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये चीज याद रखो. और दीज आर द टू फॉर्मूला विच यू कैन प्रूव बाय इंटीग्रेशन. ओके, सो आई एम नॉट प्रूविंग दिस. अगर प्रूव चाहते हो आप लोग कि मैं करूँ तो कमेंट कर देना. आई विल प्रूव इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो next thing is electric field. Just the elongation of the what? Just some special cases of the previous formula which I derived. Okay, उसी का थोड़ा सा बस एक extension है. Electric field due to
infinite line charge. So if it goes from minus infinity to plus infinity, ओके सो इधर भी इंफिनिटी और इधर भी इंफिनिटी, तो यहाँ से टी डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो थीटा वन है और जो थीटा टू है वो दोनों ही 90 डिग्री है. थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री. सो व्हाट विल हैपन? वी विल गेट ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय डी sin theta 1 plus sin theta 2. Sin 90 is 1 and sin 90 is another is 1 also. So we will get 2k lambda by d. दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको तुम्हें याद रखना होगा. ठीक है, क्योंकि ये काफी जगहों पे काम आता है. ऑल राइट, नेक्स्ट वी विल फाइंड ई पैरेलल. सो पहले तो सिमेट्री से भी दिख रहा होगा कि इधर वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इधर वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, और दोनों एट द एंड कैंसिल होकर के जीरो ही हो जाएंगे. ठीक है, ये चीज तुम्हें दिखनी चाहिए. ठीक है, कि जो इसका पैरेलल कंपोनेंट, जो इसका परपेंडिकुलर रिजल्टेंट आएगा, इसका कोई भी पैरेलल रिजल्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि इफ लेट अस से दैट दिस इज E1, so this will also be magnitudely even. So this is E1 parallel and this is also E1 parallel due to the element 1 which I say. Let us say कि ये element 1 है और ये element 1 dash है. इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रही है. These are complementary pair of elements. Okay. So E parallel 1 and E parallel 1 जो मैग्नीट्यूड है 1 डैश की वजह से जो आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो वी विल हैव E parallel इक्वल टू जीरो. ऑल राइट, सो दिस इज अनदर स्पेशल केस, इसको मेमोराइज करना है. दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, जेई मेंस में काफी सारे डायरेक्ट सवाल इसी के ऊपर बनते हैं. सो इसके ऊपर स्पेशल फोकस रखना है अपने को. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर. What do I mean by semi-infinite wire? Okay. So from semi-infinite wire, I mean that one end is tending to infinity and another end is fixed. So इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसके एक एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, and that is if this distance is d, okay, and this is semi-infinite, this has positive charge spread all over it, let us say, and the linear charge density is lambda. So that we will have two electric field here. The one will be E parallel, another will be E perpendicular. So the value of E parallel will be k lambda by d, and the value of E perpendicular will be also k lambda by. This will be E parallel and this will be E perpendicular. In this case, theta 1 is equal to 90, theta 2 equal to 0. All right. So you can solve this. You can put this in the previous formula in the last page which I have derived, and you will get your result. Okay. All right. So this is something about semi-infinite wire. Okay. So let's do a very small question on this. Okay. Small question, which is a PYQ only. Okay. Let us say that there is a square made by charge of line charge density lambda. Okay. And we have to calculate electric field at center of square. All right. So what we have to do is we have to calculate the electric field at the center of square. All are positively charged. Okay. So how do we find it? Okay. How do we find it? That's an interesting question. Okay. So what we will do is simply, all right. So this is the center of the square. Okay. So this square, this edge of the square will give two electric field. Okay. Since theta 1 and theta 2 are equal, theta 1 and
theta 2 are equal. This is theta 1 and this is theta 2. Okay, since theta 1 and theta 2 are equal, so we will have no parallel component, we will have only a perpendicular component. Okay, and if you see closely, we will also have a perpendicular component from this side. Okay, we will also have a perpendicular component from this side, and we will also have a perpendicular component from this side. So you can see that the net summation of all these vectors will be 0. So the net electric field at the center of the square will be 0. Okay, so this is a thing. And in any symmetrical figure, अगर सब कुछ ही symmetrical है and सारे line charge की जो linear charge density है वो lambda है, like this is a hexagon, and if I ask to you find the electric field at the center. Okay, so electric field at the center would again be the same. Okay, so first we will have like this, second we will have like this, third maybe we will have like this. So like the complementary pairs will cancel each other. Okay, the complementary pairs will cancel each other. आमने सामने वाले जो पेयर्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे. सो ऐसे कभी भी अगर सिमेट्रिक केसेस आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं एजेस को इनफाइनाइट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग का फॉर्मूला बन जाता है. ठीक है ना. एजेस को अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो अगर एक सर्कल है उसके लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है या चार्ज क्यू है, लेट अस से लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह मैं चार्ज क्यू ले लेता हूं, तो इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट सी will be equal to 0. So that is the electric field at the center of ring. Okay, this is electric field at the center of the ring. All right, this is the electric field at the center of ring. So, all right. All right. All right. So this is electric field at the center of the ring, and now we will move forward. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क. दिस इज ऑल्सो फेवरेट ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस. काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क. सॉरी. ओके, टेक्नोलॉजी आइडिया. हेलो. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क. ठीक है. एट आउटसाइड क्या, व्हाट इज योर क्वेश्चन? टेक्नोलॉजी आइडिया थोड़ा इलेबोरेटली लिखोगे तो आई माइट बी एबल टू एक्सप्लेन. ऑल राइट. All right, I think what he's asking is like if this is a circular ring, so what would be the electric field over here? Let us say that this is point P. What will be the electric field over here? I think that you might be asking this question. Electric field at point P. Okay. So electric field at point P निकालने के लिए देखो क्या करना है तुम्हें. तुम्हें सारे जितने भी इसके कंपोनेंट होंगे, ठीक है, यू हैव टू गो एट थीटा फ्रॉम हेयर, टेक एन एलिमेंटल डी थीटा. ओके, मान लेते हैं कि इसकी जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा है. सो इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स डी थीटा इंटू आर. ओके, सो लैम्डा टाइम्स द लेंथ विच इज आर डी थीटा, एंड देन यू विल कैलकुलेट द फोर्स. ओके, देन यू विल कैलकुलेट द फील्ड ओवर हेयर. तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो जाएगी. और सिंस ये थीटा जो है बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं आएगी, सो वी विल गेट
नो स्टैंडर्ड रिजल्ट. ओके, सो इस केस के अंदर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है. द मेथड इज कि यू विल टेक एलिमेंट्स, you will find the electric field, you will add them up vectorically in x and y direction. Okay, the best thing which I can comment is, if this is the center of the circle, this is diametrically center of circle and this point is symmetrical. So the best thing which I can comment in this is ey is equal to 0. The electric field in y direction will be equal to 0, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो होगा उसका एक काउंटर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसी भी आएगी. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक एक्स डायरेक्शन के अंदर होगा. ई एक्स इज नॉन जीरो. मैं बस इतना बोल सकता हूँ. आई कैन नॉट फाइंड द वैल्यू. अगर मुझे कोई बोले कि ई एक्स की वैल्यू निकालो, सो आई कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू. ऑल राइट, सो आई होप दिस इज द आंसर टू योर डाउट. टेक्नोलॉजी आइडिया. ठीक है, मार्क थम्स अप इफ आई हैव क्लियर्ड योर डाउट. ओके, so now let's move forward. All right, now let's move forward. So I was talking about electric field due to circular arc. Okay, so what happen is, in a circular arc is something like this. This is, let us say, theta, and we will divide the plane into the arc into two symmetrical parts. This is theta by 2 and this is theta by 2. So I have to find electric field over here. I let this point be P. I have to find the value of electric field at point P. Okay. So what I will do is, I will go at an angle of phi, okay, and take a small angle d phi, which is d phi, and let us assume कि जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है. ओके, वी कैन क्वांटिफाई दैट इन चार्ज. अगर चार्ज लैम्डा है तो इनटू आर थीटा इज इक्वल टू योर चार्ज क्यू. ठीक है, सो ये चीज भी हो सकती है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है अगर वो मेरे को चार्ज दे दे या फिर वो मेरे को लैम्डा दे दे, बट थीटा शुड बी गिवन. ओके, सो आई एम टेकिंग लैम्डा. यू कैन ऑल्सो प्रूव द सेम बाय यूजिंग द चार्ज. ऑल राइट, सो इसका लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके, सो आई विल टेक टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बेसिकली. ठीक है, एक ऐसे कर करके लूंगा, एक यहाँ पे फाइव डी फाइव. ओके, so this part, the electric field due to this part will be like this, and the electric field due to this part will be something like this. Okay, so the net resultant would be, let us say this is DE, this is DE. So from this intuition, you might get the result कि जो electric field at point P होगा, जो कि पैरेलल होगा. ठीक है, पैरेलल, बाय पैरेलल आई मीन इन द x डायरेक्शन, would be 0. Okay, by the x direction I mean that this is x direction and this is y direction. So I will straightforward write electric field due to electric field at point P in x direction is equal to 0. All right, so now we have to find it in the y direction. Okay, so how will we find? To find this, सबसे पहले मैं चार्ज लिखूंगा, मैं सबसे पहले DE लिखूंगा. ठीक है, अच्छा जो ये नेट यहाँ पे है, दिस इज 2D cos phi. ओके, सो DE की वैल्यू क्या हो जाएगी? K इंटू क्यू. क्यू की वैल्यू है लैम्डा इंटू आर डी फाइव बाय आर स्क्वायर, that is d. So I have to integrate to find the net electric field. I have to integrate 2 into dE, that is k lambda by r square by r. This will cancel 1, and cosine of phi d phi. What is the limit of phi? From minus theta by 2 to plus theta by 2. All right, I hope that this might be clear. Okay,
I hope that this might be clear. So we will integrate it. We will integrate it to get our result. 2k lambda by r into में cos phi का इंटीग्रेशन sin phi होगा. So we will get sin theta by 2 minus of minus theta by 2 which will be 2 sin of theta by 2. All right. So यहाँ पे एक 2 का फैक्टर आ जाएगा. So the net electric field will be 4k lambda by r into sin theta by. This will be the electric field. Okay. So now let's assume that this is a circle. Okay. If this is a semicircle, first of all we will prove for circle. यहाँ से circle का result तुम देख सकते हो. Circle का जो net angle होता है वो 360 होता है. तो उसका जो half हो जाएगा that would be pi. So theta by 2 equal to pi for full circular ring. Okay. फुल सर्कुलर रिंग के लिए थीटा इक्वल टू पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है. तो यहाँ से तुम्हारे पास प्रूफ हो रहा है कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग होता है वो 0 होता है. ओके, सो आई हैव प्रूव्ड इट. नाउ वी विल आल्सो टॉक सम ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. ओके, सम ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. फर्स्ट वन इज दिस. ऑलराइट, so it has a charge per density lambda. What will the electric field? The center of a half ring. Okay, so center of half ring पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन पे, इतना तुम श्योर हो. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली इन वाई डायरेक्शन. ओके, लैम्डा है ये और इसका रेडियस लेट से कि तुम्हें आर दे रखा है. सो व्हाट विल बी द ई वाई. ठीक है. सो ई वाई, दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, यू शुड रिमेंबर दिस. ओके, 4k लैम्डा ओवर आर. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाय 2. थीटा बाय 2 इस केस में 90 होता है. सो द आंसर विल बी 4k लैम्डा बाय आर. ओके, दिस इज योर आंसर. Next, for a semicircle, all right, for a semicircle, this is my thing, and I have to find electric field over here. So यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक ऐसे होगी एक ऐसे होगी, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी that will be something like this. Okay, at an angle of 45 डिग्री. और जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4k लैम्डा बाय आर साइन 45. 45 की वैल्यू होती है 1/√2 2√2 k lambda by r. ओके, एंड 2√2 k lambda by r है तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा. एक आ जाएगा 2k lambda by r. ओके, और एक आ जाएगा इधर 2k lambda by r. ऑल राइट, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस फार? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा. ठीक है. सो now let's move forward and try doing some questions. Okay, so first question is this. Figure shows rod AB 120 degree circular arc, charge minus q दे रखा है, uniformly distributed. So I can find lambda. ठीक है, तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से. लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू आर इंटू थीटा. थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री. सो 120 डिग्री इज नथिंग बट 2π/3 minus 3q by 2πr. All right, so this is the value of lambda. ठीक है, तो यार ये चीज हो गई. All right, all right, I think it's fine. Okay, so इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पहली बात होगी किसमें? अच्छा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी प्लस आई कैप. सो यहाँ से डी ऑप्शन तुम पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो. और जो मेरा फॉर्मूला था उस पर मैं फिर से एक बार ही आ जाऊंगा. 4k लैम्डा बाय रेडियस आर. ओके, एंड लैम्डा की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लोगे, और लैम्डा की वैल्यू मैंने निकाल दी है, और इनटू में साइन ऑफ थीटा बाय 2 विच इज साइन 60. साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2. ओके, सो 2 से 2 कट गया, दैट वुड बी 2√3 अपॉन में 4π/0. ओके, 4π/0. के की वैल्यू मैंने डाल दी 4π/0 लैम्डा बाय आर. सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हें इनमें से तीन ऑप्शन में से एक मैच करता हुआ दिख जाएगा, एंड दिस इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम. ओके,
तो ऐसे इजी इजी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो कर सकते हो तुम लोग कई सारे। ओके, नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन जो कि स्ट्रेट लाइन चार्ज पे है मेरे हिसाब से। ओके, straight line charge पे है ये question. So a long cylindrical volume contain uniformly distributed charge of density rho. The radius of cylindrical volume is r. A charge q revolve around the cylinder in a circular path. The kinetic energy of particle is. This is again a nice question. Okay, so let's try solving it. Okay, let's try solving this. All right, let us try solving this question. Okay. सो इफ यू वांट यू कैन ट्राई, 2 मिनट पॉज करके तुम लोग ट्राई कर सकते हो अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो और लाइव देख रहे हो तो आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो सीमिंगली अ easy problem and a nice problem as well. Okay, so I think that we should start solving the problem. A long cylindrical volume contains uniformly distributed charge of density rho. Okay, the radius of cylindrical volume is r. Okay, सो रेडियस आर दे रखा है। सो अब ये क्वेश्चन देख करके लग रहा होगा दिस इज अ 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ कैन वी सॉल्व, बट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ लाइन चार्ज। ओके, सिंस इट इज वेरी लॉन्ग, सो फॉर अ फाइनाइट डिस्टेंस, चूंकि ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा बड़ा है, सो एक फाइनाइट चीज के लिए, फॉर अ फाइनाइट डिस्टेंस वी कैन से, ओके, सो फॉर अ फाइनाइट डिस्टेंस दिस विल बिहेव लाइक अ infinite line charge. Okay, this will behave like a infinite line charge. ओके, सो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की तरह ये बिहेव करेगा। व्हाट विल हैपन कि अगर मान लो एक डिस्टेंस आर पे अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सर्कुलर मोशन में चलने के लिए किसी पार्टिकल को, वो कोई ना कोई एक नेचुरल या नेटिव फोर्सेस होता है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको तुम निकाल सकते हो बड़े आराम से। यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका लैम्डा चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू मुझे मालूम है, दैट इज 2k λ/r। सो आई जस्ट हैव टू डू 2k λ/r इक्वल टू mv² जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो 2k λ/r इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आई हैव टू फाइंड। So if I get mv², I can easily get it. Okay, so how to find this? That is a very big question. So lambda is charge per unit length. So अगर मेरे को वॉल्यूम डेंसिटी दे रखी है और मैं इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया ऑफ द सरफेस, दिस सरफेस, ओके, इस सरफेस के एरिया को मैं अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ से क्या मेरे पास लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, सो और एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया की वैल्यू है पाई r²। सो इफ आई व्हाट इफ आई पुट आर से आर यहाँ पे कट जाएगा, सो टू को भी मैं उधर डिवाइड, तो के लैम्डा निकालना है मेरे को बस, के लैम्डा, इफ आई पुट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू ए, रो की वैल्यू दिस हो गई। ओके, सो ऑल राइट, एंड दिस इज अ चार्ज क्यू, सो आई विल डू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, क्योंकि एफ बराबर क्यू ही होता है, ये मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, और क्यूई जो है वही mv²/r है दिस प्रॉब्लम में। ठीक है, सो के लैम्डा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू पाई r²। ओके, इन क्यू के लैम्डा निकालेंगे तो क्यू आ जाएगा, सो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, सो रो क्यू r² बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। दिस मैचेस विद ऑप्शन ए आगरा। ओके, दिस मैचेस विद ऑप्शन ए आगरा। ऑल राइट, two identical metallic spheres. Let's leave the problem for now. Okay, so I think that I have discussed all the problem. Okay, so now we shall discuss one more problem based on electric field only. Okay,
The problem is like this, that let us say we have a L-shaped figure. Okay, we have a L-shaped figure and two edges of square are missing. Okay, and at the last edge we have a charge Q. Okay, so we have to find the force of interaction. ओके ये बस एक ऐसे रैंडम सवाल है, ठीक है, जिससे कि यू कैन बिकम मोर कंफर्टेबल इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लेंथ इन दोनों की लेटस से एल है, तो स्क्वायर की लेंथ एल है, और स्क्वायर की जो लास्ट वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स मिस है, दो एजेस मिसिंग है, और उसकी एक वर्टेक्स पे क्या रखा, अपोजिट वर्टेक्स पे एक चार्ज क्यू रखा है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ चार्ज क्यू निकालना है। जो पहले मैं इसकी वजह से फोर्स लिख दूंगा, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, वी विल हैव अ परपेंडिकुलर फोर्स एंड वी विल हैव अ पैरेलल फोर्स, ठीक है। एंड फॉर दिस चार्ज एज वेल, व्हाट आई विल हैव चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, सो मेरे पास एक ऐसे फोर्स आएगा, दोनों के लिए मेरे पास फोर्स सिमिलर तरीके का आएगा, सो इट विल सिंपली बी 2 times E net. Okay, so how to find the E net? We can very easily find, since this angle will be 45 50 square है एंड थीटा टू जीरो है, सो ई नेट के लिए हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं के लैम्डा बाय एल इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, दिस विल बी इन प्लस आई कैप, एंड टू फाइंड द नेगेटिव ई पैरेलल cos थीटा 1 minus cos थीटा 2, cos थीटा 2 is itself 0, so k lambda by L cos theta 2 minus cos theta 1. So cos theta 2 is 0. So it will be basically 1/√2 minus 1. Or since I have taken already negative sign outside, so 1 minus 1/√2 in J cap. Okay, so that will be the E net vector. You can just find the magnitude and calculate the force, or simply K lambda by L. We can just multiply QE vector to get the force. Q into E net vector into 2, since 2 E net is the net force, equal to my F interaction. Okay, so K lambda by L, I think I can take this outside, and 2Q we will multiply in this, जो बचा कुचा पार्ट है वो अंदर रह जाएगा, 1/√2 I cap minus 1 minus 1/√2 J cap. Okay, this will be our final answer. Okay, so this is all about today, I think. Okay, this is all from my side. Before ending the session, uh, I think I should give a homework question to you. Okay, so homework question will be, try deriving electric field due to hollow sphere. Okay, try deriving electric field due to hollow sphere. Okay, so what is the condition of a hollow sphere? We have charge per unit area sigma, sphere is of radius r. So try finding electric field inside the sphere, electric field outside the sphere. These are the two problems which you might have to find. Okay, we will discuss this. This is a very standard question and very useful. Okay, and after this, one more very important and very nice question which might be asked in your exams. Okay, so let us assume that this is a half ring and this is another half ring. Okay, so let me use a different color pen to show the other half ring. Okay, let's use purple. So this is a different half ring. Okay, so what the thing is,
the thing which is happening is this has lambda, this has charge density minus lambda, and if I take this dx apart, these two rings dx apart, okay, so you have to first prove, or I will say that I also don't know about it, so I will say check if the two perform simple harmonic motion. If yes, compute time period of oscillation. All right. So try solving these two questions. This I will discuss in next class, and this also I will discuss in next class if I get time. Okay. So try this. Very nice question, I must say. This is a double star question. All right. So you might try solving the problem. Okay. And this I will discuss in next class if I get time. But if I don't get time, this might get discussed in the coming few classes. And if you want more questions like on the previous page, then comment problem solving session. Okay. Comment problem solving session in the comment section. Okay. So I will take time and select a few questions which you might feel interesting like this one. Okay. So this is all about it for today's session. Okay. I think that I hope that you have enjoyed. Thank you for giving your time and attending the session. Okay. So thank you for attending the session and stay healthy, stay happy. Okay. So let's meet again tomorrow at 10 a.m. at 10 p.m.